हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो इस सेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड होंगे और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। TGT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीज आर ऑप्शंस, यू कैन सी यागो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मैकबेथ, सी ऑप्शन ओथेलो एंड डी ऑप्शन पोलोनियस। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर है सी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलिवन। मात्र इतना सा क्वेश्चन है, कैलिवन TGT 2009 में पूछा हुआ है। अब आगे हम लोग इससे ऑप्शन से ही समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, एंड ऑप्शन बी है मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, killed Prospero in the Tempest, and is the villain in the Tempest. So option is D is right. Caliban is the villain in the Tempest. Play. Now take question number 3. Ophelia is the beloved of. So जो ओफेलिया थी वो किसकी प्रेम का थी? मैकबेथ की थी, हैमलेट की थी, या ओथेलो की थी, या रोमियो की थी? बताइए। आई थिंक ये तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट सेशन में भी आप लोगों को करवाया था मैंने, और सेकंड सेशन में भी हुआ है ये शायद, और ये थर्ड सेशन में भी आ गया क्वेश्चन। तो आप लोग इसकी रिपीटिशन से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ना। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। TGT 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लव स्लेवर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस, यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर। टू टाइमर इज स्टार्ट, एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन से डिसाइड होगा क्या पूछा जा रहा है इसमें। वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek. ये कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल कमेंट रहा था। आप लोग ऑप्शन में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में किसने किया था। शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर सी। शेक्सपियर इज अ रेनेसांस playwright, a restoration playwright, and a 20th century playwright, and option D, a classical playwright. So what will be the right answer? Right answer is option number A. Now take question number 7. Which of the following plays of Shakespeare has an epilogue? भाई विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में एक एपिलॉग है? द टेम्पेस्ट में, हेनरी फोर्थ में, हैमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 8। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? These are options: Ben Jonson, John Ruskin, Thomas Carlyle, William Hazlitt. So what will be the right answer? Right answer is going to be option number B, John Ruskin. Now take question number 10. The line "there is a special province in the fall of Sparrow" occurs in हैमलेट में, हेनरी 4 में, एंड द टेम्पेस्ट में, एंड ट्वेल्थ नाइट में। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 10। द
rarer action is an virtue than a benegerence. This line occurs in Shakespeare. ये लाइन है वो शेक्सपियर के किस वर्क में देखने को मिलती है? हेमलेट में, किंग लियर में, द टेम्पेस्ट में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस एंड टाइमर इज अबाउट टू एंड. सो राइट ऑप्शन इज सी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 11. What is the subtitle of the play Twelfth Night? Twelfth Night का सबटाइटल क्या है उसे बताना है आप लोगों को. A ऑप्शन और what is you will, और and B ऑप्शन और what you will, and C ऑप्शन और what you like it, and D ऑप्शन और what you think. So right option option number B or what you will. Now take question number 12. One of the characters of Shakespeare has been called the fourth, which it is another repeated question. Ophelia, Lady Macbeth, Emilia and Juliet. So without any doubt option number B is right. Yes. So now take question number 13. Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? The sleeping and the dead are what as picture. This is the early, oh sorry यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, of childhood that fears a painted devil. First witch, second witch, third witch and none of them. जो कहीं ना कहीं 3 विचेज थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अपनी सब ने भविष्यवाणियाँ की थी, तो वही एक इसमें भविष्यवाणी दी हुई है और पूछा जा रहा है कौन सी विच ने ये भविष्यवाणी की थी, तो ये फर्स्ट विच ने की थी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 14. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक वेट द फूड ऑफ लव्स प्ले ऑन? दीज आर ऑप्शंस द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ and Romeo and Juliet. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is going to be option number B, Twelfth Night. Now take question number 15. The Dark Lady appears in the sonnet of. Dark Lady किस sonnets में किसकी sonnet में देखने को मिलती है? सरे की, वाइट की एंड शेक्सपियर की एंड स्पेंसर की. सो आप लोगों को पता होगा विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट को रोट किया है. सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. एंड जो डार्क लेडी है उसे 26 सोनेट्स को एड्रेस किया गया है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 16. विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? टीजीटी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. इसमें पूछा जा रहा है इसमें से शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है? टिटस एंड्रोनिकस नहीं है, एडवर्ड द सेकंड नहीं है, हैमलेट नहीं है एंड रिचर्ड थर्ड नहीं है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड द सेकंड. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 17. हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर. द हैमलेट वाज रिटन बाय मेलवाइल, गल्सवर्दी, पॉप, फॉकनर. आंसर आप लोग समझ पा रहे हो. हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द हैमलेट वाज रिटन बाय, ये फॉकनर के द्वारा लिखा गया है. माइनर से डिफरेंट है, केवल डिफरेंस है, केवल उसके आगे द लगा देते हैं, तो किसने? फॉकनर ने लिखा है उसे. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 18. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this and this. These are options: King Lear, Macbeth, Hamlet and Henry IV. So what will be the right answer? आप लोगों को 5 सेकेंड्स का टाइम मिलता है. सो राइट आंसर क्या होगा इसके इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? पीजीटी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी,
Hamlet. Now take question number 20. The early plays of Shakespeare were written between, जो प्रारंभिक या पहले के जो नाटक थे शेक्सपियर के वो किस टाइम ड्यूरेशन के दौरान लिखे गए? 1597 to 1625, 1598 to 1614, 1590 to 1595. So option number C is right. Now take question number 21. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incident of his era. Which of these it is said to be? The execution of Sir Walter, the formation of trade relation, the revelation of the Duke of Essex, the supremacy of Spain on land and sea. So the right answer is option number C. Now take question number 22. From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Option number A, Hamlet. Option number B, The Tempest. Option number C, The Macbeth. And option number D, Romeo and Juliet. So what will be the right answer? Timer is about to end. So right answer is going to be option number C. Now take question number 23. In which country is the story of Othello set? किस देश में ओथेलो प्ले की स्टोरी को सेट किया गया था? डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस, इंग्लैंड. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 24. विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले एंड ट्रेजिक कॉमेडी. Right answer option number B. Now take question number 25. Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overlapping ambitions? These are options: King Lear, Macbeth, Hamlet, and Othello. So right answer option number B. Now take question number 26. Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? PGT 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. Viola, Portia, Miranda and Beatrix. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number C. Now take question number 27. What can be the best explanation for the characters Boltman and Cornelius appear? I think maybe spelling is incorrect, but so you can read all options. Right answer is option number B, Hamlet. Now take question number 28. To which character is in Shakespeare Hamlet does the following description apply? The tedious, Viscere, and whom meddles his way to his doom? Claudius, Hamlet, Polonius, Rosencrantz. So right answer is going to be option number B. Now take question number 29. The rest is silence that does. These are the last words of before his death in Shakespeare's play. It is very easy question. So right answer is option number C, Hamlet. Now take question number 30. Oh God, how very stale and unprofitable seems to be all the usage of this word. Which of
Shakespeare's tragic heroes utters these words? Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number A, Hamlet. Now take question number 31. Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare, where his masterpieces were first performed? वुडेनो, ग्लोब, रोज, कर्टन। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ग्लोब थिएटर। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 32. एज फ्लाइज टू वेंटन वॉइस और बी टू द गोड्स, they kill us for sport. The above lines by Shakespeare occurs in the play. These are options: Julius Caesar, Macbeth, Hamlet, King Lear. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answers. So right answer is going to be option number D, King Lear. Now take question number 33. शेक्सपियर रोट, TGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमरस एंड कॉमेडीज ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंटल कॉमेडीज. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? So option number A is right. Now take question number 34. Complete the following sentence by selecting the correct options. These are options: Stratford at Avon, Stratford upon Avon, and Stratford in Avon, and Stratford on Avon. So what will be the right answer? Right answer option number D. Now take question number 35. Our bodies are our gardens, to which our wills are gardeners. The above words from the speech of Hamlet, Iago, Viola, and Brutus. What will be the right answer? So right answer is option number B, Iago. Now take question number 36. Portia is the heroine of the play. TGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Hamlet, The Merry Wives of Windsor, The Tempest, The Merchant of Venice. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number D, The Merchant of Venice. Now take question number 37. The lines, age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety. These are options: All for Love, Hamlet, Antony and Cleopatra, As You Like It. So what will be the right answer? Option number C is right. Now take question number 38. Othello killed Desdemona out of. TGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। These are options: anger, hatred, and love, and ignorance. So what will be the right answer? D is right answer. Now take question number 39. Which of the following plays is not by Shakespeare? TGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Much Ado About Nothing, Edward II, A Midsummer Night's Dream, King Henry IV. So B is the right answer, Edward II. Now take question number 40. Who wrote the celebrated book Shakespearean Tragedy? PGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AC Bradley, Edward Bradley, and FH Bradley.
Dr. Henry Bradley. So what will be the right answer? Right answer option number A, A.C. Bradley. Now take question number 41. With this key, sonnet Shakespeare unlocked his heart. The words are from Coleridge, Byron, Hazlitt, Wordsworth. So right answer is option number D, Wordsworth. Now take question number 42. Sir Toby Village is a character is Shakespeare's PGT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. Hamlet, Twelfth Night, C. Macbeth, D. Othello. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number B, Twelfth Night. Now take question number 43. Which play of Shakespeare opens with the lines, when shall we three meet again in thunder, lightning or in rain? So these are options: Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number A, Macbeth. Now take question number 44. Which one of the following is not authored by William Shakespeare? TGT 2004 का पूछे हुआ क्वेश्चन है. Hamlet, The Tempest, Julius Caesar, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So what is the right answer? So right answer is option number D. Now take question number 45. Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mr. Dalloway? These are options: if music be the food of love, play on. Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. Those are pierces that were his eyes. So right answer is option number A. Now take question number 46. In Shakespeare's Macbeth, who was untimely ripped from his mother's womb? These are options: Macbeth, Macduff, Duncan and Malcolm. So what will be the right answer? It is another easy question. So each and every guy, I think, take the right answer. So Macduff is the right answer. Now take question number 47. Which Shakespeare's play has a mosque in it? GIC लेक्चर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. Midsummer Night's Dream, As You Like It, The Tempest, Twelfth Night. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. Right answer is option number C. Now take question number 48. Shakespeare's play has a mosque in it. GIC लेक्चर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. A Midsummer Night's Dream, As You Like It, The Tempest, The 12th Nights. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number C, The Tempest. Now take question number 49. Shakespeare's Measure for Measure is a GIC लेक्चर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. मेजर फॉर मेजर क्या है? डार्क कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है एंड रोमांटिक कॉमेडी है. अगर आप लोगों ने कॉमेडीज के प्रकार पढ़े हैं तो आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ डार्क कॉमेडी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 50. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एज एन एपिलॉग इन इट? These are options: The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream and Macbeth. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number A, The Tempest. Now take question number 51.
The rest is silence. These are the last words spoken before the death. It is repeated question, so I think so we have to need skip that question, because if you read it then totally time waste. So right answer is option number D. Now take question number 52. The twin brother of Viola in Twelfth Night is Giaci, Cesario, Sebastian, Orsino, Antonio. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number B, Sebastian. Now take question number 53. Who wrote the essay entitled On the Knocking at the Gate in Macbeth? Shakespeare, Dr. Johnson, T.S. Eliot, and Thomas De Quincey. So what will be the right answer? It is very important question, so you know very well. At the Knocking of the Gate is written by Thomas De Quincey and it is published in 1823. Now take question number 54. Which one of the following statement is true of helmet? आप लोग ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़े बड़े ऑप्शंस हैं तो बड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए एंड बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, 54 क्वेश्चन के लिए. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट हैपन्स टू वर्सेस्टर एंड Vernon in the end of the play Henry IV Part First? They are sentenced to death by King Henry. They are pardoned for their action. They are killed by Falstaff. They are made ministers in King Henry's court. Right answer is option number A. Now take question number 56. Which purpose is resolved in the scene between the two grave diggers in Hamlet? These are options. It provides suspense. It confirms that Laertes will redeem his family honor. It provides comic relief. It provides joy. So right answer is option number C. Now take question number 57. Who calls Ariel thou which art what air in Act 5 scene first of the Tempest? झारखंड पीजीटी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. फर्डिनेंड, कैलिवन, प्रॉस्पेरो, गॉन्जालो. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So option number C is right. Now take question number 58. Shakespeare observed the three unities of the distress and diligently in the Tempest. These are options: time, place, acting, time, place, action, time, action, area, death, place, action. So what will be the right answer? So right answer is option number B, time, place, action. Now take question number 59. Who are the spirits in the play of the Tempest? Ariel, Nymphs and Stephano. लोग पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शंस को. So what will be the right answer? Timer is about to finish. So right option is option number C. Now take question number 60. Who is Laertes in the play Hamlet? बताइए Laertes जी कौन है Hamlet प्ले में? Brother of Ophelia, rival of Hamlet, friends of Hamlet and son of Claudius. So right answer is brother of Ophelia. Now take question number 61.
In the Tempest, Miranda, Caliban, and Prospero stay in the island of the deadest years. These are options you can see and read as well. You have enough time to guess the answer. So, right answer is option number A. Now take question number 62. Complete the following lines uttered by Hamlet. Oh, what a rough and peasant slave am I. Is it not here? Did us here? Act 2 scene. And second in line 545. These are options. So what will be the right answer? You can guess. So right answer is option number C. Now take question number 63. What are the names of the four bodies left on the stage at the end of the play Hamlet? These are options: Claudius, Polonius, Hamlet, Laertes. Claudius, Gertrude, Hamlet, and Laertes. Claudius, Gertrude, Horatio, and Laertes. Claudius, Gertrude, Hamlet, and Rogenrens. It is very difficult to pronounce it, guys. So right answer is option number B. Now take question number 64. He was not an age but of all times who said the above statement of whom? These are options you can read easily. So right answer is option number A, Johnson, Shakespeare. Now take question number 65. The character of Jacques in As You Like It can be best described as. These are options. So right answer is option number C, melancholic. Now take question number 66. The sleepwalking scene occurs in. sleepwalking scene कहाँ पे अपेयर होता है वो बताना है. किंग लियर में, मैकबेथ में, ओथेलो में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में. कहाँ होता है बताइए? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 67. हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट में स्वयं के प्यार से कौन बीमार होता है? मालवोलियो, सर टोबी, ब्लैक, सर एंड्रयू. What will it pronounce? I have no idea. And D option is Olivia. So right answer is option number A. Now take question number 68. For what is the phrase the mousetrap used by Shakespeare? DSSPTGT 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. Hamlet's tragic fellow, the ghost of Hamlet's father, the play within the play in Hamlet, Hamlet's conscience, the play within the play. Now take question number 69. Royalty, thy name is woman who says this line. It is another repeated question. So right answer is option number A, Hamlet. Now take question number 70. In Shakespeare's Tempest, who is Sebastian's brother? Antonio, Alonso, Ferdinand and यहाँ पे गोंजालो होना चाहिए मेरे हिसाब से. चलिए जो भी है. Right answer is option number B, Alonso. Now take question number 71. Which of the following is a pastoral comedy by William Shakespeare? Hamlet, Tempest, As You Like It, King Lear. So what will be the right answer? The right answer is option number
C as you like it. Now take question number 72. Who is King Lear second's daughter's husband? किंग लियर की सेकंड जो डॉटर थी उसका हस्बैंड कौन था? ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, अर्ल ऑफ कैंट, ड्यूक ऑफ वर्गंडी एंड ड्यूक ऑफ अल्बनी. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number A, Duke of Cornwall. Now take question number 73. Neither a borrower nor a lender be forlorn often losses both itself and friends who speak these lines. These are options: Polonius, Horatio, Laertes, Prospero. So right answer is option number A, Polonius. Now take question number 74. Who is called the Ward of Heaven? It is another very easy question. So right answer is Shakespeare. Now take question number 75. Beulah is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes shore with the help of captain. This is the opening part of the play by Shakespeare. As you like it, Tempest, Richard II, Twelfth Nights. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. So right answer is option number D. Now take question number 76. Who is the daughter of Shylock in the Merchant of Venice? Merchant of Venice में Shylock की डॉटर का नाम क्या है? तो उसकी जो डॉटर का नाम है वो क्या है? वह जेसिका. Now take question number 77. In which Shakespeare's play the following lines appear? Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as man's gratitude. These are of else well then that ends well, as you like it, Antonian, Cleopatra, King Lear. So what will be the right answer? You can guess. You have enough time to guess the answer. No, right answer is option number B, as you like it. Now take question number 78. Name the theatre in which Shakespeare had shares. किस थिएटर में विलियम शेक्सपियर के शेयर थे? द ब्लैक फेयर्स एंड द थिएटर, द यूनिवर्स, द रोज. It is another very easy question. So right answer is option number A, the black fairs. Now take question number 79. Which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? Love's Labour Lost, The Merchant of Venice, Venus and Adonis, Sonnets. So right answer is option number what? C. Now take question number 80. Identify the right chronological sequence. Macbeth, Julius Caesar, The Tempest of the Shrew, Taming of the Shrew, The Tempest, The Taming of the Shrew, Julius Caesar, Macbeth, The Tempest. So बताइए क्या राइट आंसर होगा? सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट. क्वेश्चन नंबर 81. आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन द स्टोरी ओविड टेल्स इन द मेटामॉर्फोसिस.